Hello everyone, welcome to Science Express. Now let's start current affairs capsule, daily current affairs, September, day 21. As per the news, who has recently launched the website for the Ashtalakshmi Mahotsav? समाचार के अनुसार किसने हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए एक वेबसाइट को लॉन्च किया? सो नेम ऑफ द पर्सन इज ज्योतिरादित्य सिंधिया. यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, Honorable Minister for Communication and Development of North Eastern Region, has officially launched the website for the Ashtalakshmi Mahotsav. The festival celebrates the 8 northeastern states. Okay, so name of the person is Jyotiraditya Scindia, has recently launched the website for the Ashtalakshmi Mahotsav. As per the information, which ministry recently organized a dialogue on the theme Montreal Protocol Advancing Climate Action? जानकारी के अनुसार किस मंत्रालय ने हाल ही में थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उन्नत जलवायु कार्रवाई पर एक संवाद आयोजित किया? सो नेम ऑफ द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज held a dialogue ahead of the 30th World Ozone Day. The theme was Montreal Protocol Advancing Climate Action. World Ozone Day recently observed on 16 September. Okay. As per the news, what is the new name of Port Blair in Andaman and Nicobar Island? समाचार के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीपों में पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? आंसर इज श्री विजयापुरम. The government has decided on 13 September 2024 to rename Port Blair in Andaman and Nicobar as a Sri Vijayapuram, and with this decision Sri Vijayapuram becomes the capital city of the Union Territories of Andaman and Nicobar Island. Okay, so Port Blair का नया नाम है अब Sri Vijayapuram. Recently, where has India's second largest butterfly species has been discovered? So हाल ही में भारत के दूसरे सबसे बड़ी तितली प्रजातियों का खोज कहाँ पर किया गया? आंसर इज मादुराई इन तमिलनाडु. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई, द साउदर्न बर्ड विंग, was recently spotted on the satellite campus of the American College in Madurai, Tamil Nadu, and it wingspan about 190 millimeter. Okay, and largest butterfly in India, golden bird wing, its wingspan about 194 millimeter. Okay, so name of the largest butterfly is golden bird wing, and second largest butterfly is southern bird wings, and it recently discovered in Madurai, Tamil Nadu. As per the information, recently where has the Asian Cricket Council Women's Under-19 Asia Cup been launched? हाल ही में जानकारी के अनुसार एशिया क्रिकेट परिषद महिलाओं के अंडर-19 एशिया कप कहाँ लॉन्च किया गया है? सो आंसर इज मलेशिया. द एशियन क्रिकेट काउंसिल ऑन 11 September 2024 officially launched the Women's Under-19 T20 Asia Cup during the Asian Cricket Council Executive Board meeting held in Kuala Lumpur in Malaysia. Okay, so answer is Malaysia. Recently, who become world first player to compete 100 crore follower on social media? हाल ही में सोशल मीडिया पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरा करने के लिए दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गया? आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो. क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू हैव 1 billion follower on social media platform, and he recently launched his YouTube channel on 21st August 2024, and it reached 15 million subscriber on first day. Okay, and 50 million subscriber within the first week. Okay, so name of the person is Cristiano Ronaldo, become the world's first player to complete 100 crore follower on social media. Recently, which union minister has launched a web portal related to Swachhata Abhiyan 4.0?
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता अभियान 4.0 से संबंधित एक वेब पोर्टल लॉन्च किया? नेम ऑफ द पर्सन इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह. Union Minister Dr. Jitendra Singh has launched a dedicated web portal to monitor the progress of the special Swachh Bharat Abhiyan 4.0, and it aims of this campaign its institutionalization, cleanliness and central government office. Okay, its aim of this campaign is to institutionalization cleanliness in central government office. So name of the person is Dr. Jitendra Singh has launched a web portal related to Swachhta Abhiyan 4.0. As per the information, recently, where was the 20th Maritime State Development Council meeting held? हाल ही में जानकारी के अनुसार 20th Maritime State Development Council meeting कहाँ पर होस्ट किया गया? Answer is Goa. The 20th Maritime State Development Council in Goa and concluded with the key outcome for this India's maritime sector and discussed mainly focus on port modernization, connectivity, compliance and maritime tourism and navigation, sustainability and port security. These are the focus topic in this meeting. Okay, so इस बार का लोकेशन था गोवा. Recently reported who has topped the list of Times Magazine World Best Companies of 2024. हाल ही में रिपोर्ट किया गया किसने 2024 के टाइम मैगजीन के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कंपनी का सूची में सबसे ऊपर है. सो नेम ऑफ द कंपनी इज एप्पल. टाइम मैगजीन वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 list has been unveiled highlighting the top 1000 companies and globally Apple top in the list. Okay, and followed by Accenture, it is a Ireland company, then Microsoft, it is a US company, and BMW Group, it is a German company. Okay, Apple in the list in a top position, and second position is Accenture, third position Microsoft, and fourth position is BMW Group. नाउ इट इज़ अ क्विज क्वेश्चन. इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना होगा. जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका आंसर को मैं एक हार्ट साइन दे दूंगा. रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज द 7th एडिशन द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज. हाल ही में किस देश ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज के 7th एडिशन का आयोजन किया है? सो दिस आर द ऑप्शन: ओमान, इंडिया, सऊदी अरबिया, इजराइल. इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना होगा. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.